अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुकमास अकेडमी। आज की नई वीडियो स्टूडियो में बात करने लगे क्लास 6 के कंप्यूटर साइंस के पेपर के मुतालिक। इस वीडियो के अंदर आपको 6 क्लास की ऑल विजन शेयर किए जाएंगे। बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो के अंदर आप 17-18 मिनट की वीडियो देख लेते हैं और एक ही विजन होता है, लेकिन इस चैनल पर आपको 16-17 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर आपको ऑल विजन बताए जाएंगे, जिनकी तैयारी के बाद आप 90+ नंबर आसानी से गेन कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने पर छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लास्ट में शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्टिव पार्ट। हम इसकी एमसीक्यूज को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू था, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज विंडोज। ICT is considered eco-friendly because it reduces paper use. The microprocessor was introduced in fourth generation. The manufacturing industry uses this ICT tool for 3D printing. The device used to input sound into a computer is called microphone. The external storage device is SD card, जो memory card जिसको आप कहते हैं. The fluorescent screen is part of CRT. RAM stores data for CPU. Excuse number 9. The link between the hardware and the user program is operating system. Identify the link used to easily access a file folder in Windows. Shortcut. Good planning helps to reduce failure risk. Looking for similarities among and within problems is called pattern recognition. The second step in problem solving is problem definition. The process of breaking down a big problem into smaller parts is called problem analysis. Identify simple problem for the given option, counting up to 100. In algorithm, the process of executing specific steps again and again is called loop. In repetitive flow, a set of statements is executed again and again until a certain condition remains true. A problem that can be solved quickly using fewer steps and fewer resources is called simple problem. An algorithm must include start and stop. The process of the decomposition in algorithm is to break problem. The process of finding and removing the errors from program is called debugging. The number of steps to develop a computer program are 4. The language easily understandable by the computer is machine. The number of program constructs are 3. Using someone's work without permission is called the term information privacy refers to protection of personal information. Repetitive movement for a long time may cause repetitive injury. A responsible citizen should be trustworthy. Select the appropriate use of the internet in ICT lab. Research for a school project. A person who takes the most risk and earns the most profit in entrepreneur. SpaceX is a project of Elon Musk. An example of digital business is फूड पेंडा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, इसको देखते हैं अब हम। नंबर 1 MCQs. द डेटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक्सपेंशन ऑफ व्हाट ICT इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी.
Programming languages were first used in second generation. ICT is eco-friendly because it has eliminated the use of paper. The device used to imprint sound into a computer is called microphone. आप notice करें आपको वही एमसीक्यू बार बार repeat होंगे. The disadvantages of HDD is B. Noisy. LCD is an observation of. आपने जो ऑब्जर्वेशन होती है उनको अच्छी तरह आपने याद करना है क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर पूछी जाती हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. चूज अ डिवाइस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. RAM. Operating system is an example of system software. The process of a shortcut is easy access to a file and folder. Algorithm thinking help in solving problem. Select the output of the following algorithm. ये आपको एल्गोरिथम दिया गया, आपने इसका क्या करना है, आपने आउटपुट चेक करना है, आउटपुट देना है. इसका आंसर आपके पास B3. The statement problem should be clear and specific, refers to identification of problem. Breaking इसका सही है. Breaking a big problem into smaller parts help in solving a big problem. ठीक है जी. अब नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं. एमसीक्यू नंबर 50 है. 15. Identify the simple problem from the given option. Writing table. In repetition flow, to stop the loop execution, the given condition should be false. The instruction that repeats number from 1 to 10 automatically is an example of repetition. A problem that can be resolved quickly using few steps and fewer resources is called simple problem. Identify an example of repetition in daily life. Brushing every day. Breaking a problem helped in easy to solve. An error in computer code is called bug. Studying a problem from useful information. Analyze the problem. The language easily understandable by the computer is called machine. In computer program, if statement is used for selection. Using someone's work without permission is issue that tends to interface with the society principle or called ethical issues. Long exposure to blue light effects. Sleep. A member of a community is called citizen. An important rule to follow in the school ICT lab is keeping the lab clean. Source new ideas, goods, service, and procedures. Such entrepreneur is known as innovator. The owner of Eatoy, Numan Sikandar. In e-business information collection, mood is mostly online. जी स्टूडेंट, चलते हैं अब अपने अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, यानी विजय नंबर 3 की तरफ. इसकी तरफ चलते हैं अब हम. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है विजय नंबर 3. इसको देखते हैं. A database is an example of application software. A set of programming, a set of computing tools that allow people and organizations to interact the digital world is ICT. Honeywell 6000 series computer belong to third generation. The industrial uses of ICT device is printing. Magnetic field sensor is classified as an input device. The plug and play secondary storage device is USB. The fluorescent screen is part of CRT. RAM stores data from CPU.
The link between the hardware and the user program is called operating system. Select the common storage unit of a computer is file. Decomposition refers to breaking a complicated problem into smaller problems. Looking for similar among within problems is called pattern recognition. Select the problem solving step that considers the implementation's cost. Scrub consider E in selecting best solution. The in problem analysis the total number W's we used 5. Identify simple problem from the given option counting up to 100. The loop that stops after limited repetition is called finite. एमसीक्यू नंबर 17 आगे पास है the instructions that repeats number from 1 to 10 automatically is an example of repetition. The way of getting to a solution through clear definition of steps needed to solve a problem is called comput- computational thinking. Identify an example of repetition in daily life. Brushing every day. Breaking down a big problem to smaller problem is called decomposition. Select the first step in the debugging process. Identify error. The third step of developing a computer program is write a program. A programming language that is near to human language called high level. The number of program constructs are 3. Using someone work without permission का plagiarism. A correct computer lab rule is make is correct sorry 26 का आपका आंसर है C. Do not visit unapproved sites. Repetitive movement for a long time may cause repetitive strain injury. An essential element of digital citizenship includes having access to digital devices. An important rule to follow in the school ICT lab is clean the lab, keeping the lab clean. An entrepreneur is stores and runs his business. The owner of Odapai is Numan Sikandar. The final step of process is web resting. अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेपर की तरफ. जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब आ चुके हैं लास्ट विजन्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज इनको सॉल्व करते हैं. इसके बाद अपने सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे. द डेटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बार बार रिपीट हो चुका है. अ साइट ऑफ कंप्यूटर टू कंप्यूटिंग टूल्स दैट अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेक्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड इज ICT. Programming language first used in second generation. In businesses organization, ICT is primarily used for land navigation. Scanner is an example of processing device. The disadvantages HDD is सॉरी स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज गलत हो चुके हैं. मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं. नोट कर लें. एमसीक्यू नंबर 4 का जो आंसर है वो है बी. एंड एमसीक्यू नंबर जो 5 का आंसर है वो है सी. वही मैं देख रहा हूँ कि ये गलत है. ज़रा जो इनके आंसर्स दिए गए उनमें ही गलत है. क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 6 हम कह रहे थे द डिसएडवांटेज ऑफ HDD इज noisy. LCD is an example of non-emissive. Price of ROM as compared to RAM is low. Operating system is an example is समझ कौन सी ये system software. The purpose of a shortcut is early access to file. Selecting a solution requires checking difficulty level, forcing and
focusing on important information and ignoring irrelevant details refer to abstraction. The second step in problem solving is problem definition. The process of extracting the 5 W's from a problem statement is called analyzing problem. Finding the area of a rectangle is a type problem. Simple. 16. In repetition flow to stop the loop execution, the given condition should be false. In repetitive flow, a set of statement is executed again and again until a certain condition. इसका आपका आंसर है true. A problem that requires less time and resources to be solved is called simple problem. And algorithm must be heading a C. Breaking a problem help in easier to solve. An error in computer code is called bug. Studying a problem for useful information is called analyze the problem. A programming language that is new to human language called high level. In computer program, if statement is used for selection. Copyright is a law that protects the original work of owner. The certain information privacy refers to B. The repetitive movement for a long time may cause repetitive certain injury. A responsible citizen should be A. An important rule to follow in the school lab is keep the lab clean. A person who takes the most risk and earns the most profit is called entrepreneur. An example of a social entrepreneur is Pakistan. In Pakistan is Abdul Sattar Idi. An example of digital business is फूड पैंदा. ये थे हमारे एमसीक्यूज. अब हम करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट को. सब्जेक्टिव पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप टीचर हैं तो आपको ये पेपर हम पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी लिए बगैर और आपको इजाज़त है कि आप ये पेपर हमसे ले सकते हैं. अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको एक पेपर पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा. अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं फिर जी स्टूडेंट्स, सारा पहला क्वेश्चन है राइट 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी. List 5 names of input device. Write an algorithm to add 3 numbers. Write any 5 steps to efficiently solve a problem. Define complex problem and give 3 examples. Define simple and complex problem. List any 5 simple high level languages, programming languages. List 5 steps of entrepreneurship process. Write any 6 characteristics of a good citizen. Explain any 2 health related issues caused by excessive usage of ICT. ये था हमारा पेपर नंबर 1. देखते हैं हम अपने पेपर नंबर 2 को. जिस वजह से हमारे पास पेपर नंबर 2 है. इसमें हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन पहले था डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आ गया. राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस. Define the lightman and explain its working in 3 steps. Write an algorithm to add 2 numbers. Define testing the solution and write 3 factors to choose the best solution. List 5 techniques to deconstruct a problem. Write an algorithm to find the average of 3 numbers. List 5 interface part of a Scratch software. List 5 types of entrepreneurship. Write 6 ethical standards. Define any 3 types of plagiarisms.
ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने पेपर नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पेपर नंबर 3। इसमें फिर ऐसे के मुतालिक क्वेश्चन आप यूजेस पूछ लिए उसने। डिफाइन अ बारकोड रीडर एंड लिस्ट विद 3 फंक्शंस। राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स, रिपीट। डिफाइन टेस्टिंग द सॉल्यूशन, ये भी रिपीट हो चुका है दोबारा से। डिफाइन एक्सप्लेन 5 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये भी शायद रिपीट हुआ है। Write an algorithm to check whether a number is even or odd. List any 5 operator used in scratching program. Write the names of 5 famous entrepreneurial companies. Write any 6 responsibilities of a citizens. Write 6 health problem caused by inappropriate uses of ICT devices. अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेपर की तरफ, यानी पेपर नंबर डी की तरफ। पहला क्वेश्चन अगर रिपीट है, पेपर नंबर 2 से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन भी अगर रिपीट है, थर्ड क्वेश्चन भी अगर रिपीट है। राइट एंड 5 स्टेप टू ऑफिशियली सॉल्व अ प्रॉब्लम, रिपीट, ये भी रिपीट है। ये भी रिपीट है आपका क्वेश्चन, ये भी रिपीट है आपका क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है स्टूडेंट्स। तो आपने नोटिस किया होगा आपके पेपर नंबर 4 में हर क्वेश्चन रिपीट है। मैंने इसके बाद क्वेश्चन पेपर नंबर 5, 6 और 7 में भी देखा, उसमें भी सारे क्वेश्चन रिपीट है। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अब आपका कंप्यूटर का पेपर कैसा हुआ, साथ में अब आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।